क्लियर? दिस इज अ क्वेश्चन। हम डायरेक्टली भी इनको कट कर सकते हैं एक्स की वैल्यूज को, ठीक है, और इस तरह से कर सकते हैं। 8 3s are 24, ओके। नाउ x to the power 6, जब ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर x है ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा ना। वी नो दैट सेम बेस पावर जो है वो एडअप होती है, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6 माइनस दिस, ठीक है। नाउ 2 minus 2, 2 negative 2, तो फर्दर जब हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 x to the power 3 y to the power 0, ओके। Clear. And the y to the power 0 will be 1. The answer will be 3x cube, okay. Clear. Okay Salman, simple. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। हाँ। सलमान इस अपने कर्सर को आप साइड पे करें। ठीक है। ओके, द क्वेश्चन नेक्स्ट इज 25 a to the power 3 b to the power 2 plus 15, okay, a to the power 2b divided by 5ab. Okay, this is the question. Now start it. What to do? First of all, separate them like this. 25 a to the power 3 b to the power 2 divided by 5 to the 5 ab plus sign 15 a to the power 2 b divided by 5 ab. सेपरेट कर दिया हमने, ओके। Clear. Now just cut off the values like this. 5 ones are 5 5s are, okay. Okay. Okay, 5 5s are, okay. a to the power 3 -1, b to the power 2 -1, because ये जब ऊपर जाएंगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ओके। प्लस Okay. Yes. 5 1s are 5 3s are 3 a to the power 2 -1 b to the power 1 -1, 1 this is 1 this is, okay. Now 5 into a square b plus 3 into a, we know that 1 minus 1 is equal to 0 and b is equal to 1, okay. So when multiply with this is the simple answer. Is there any problem till now? नहीं, ये तो क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ।